So, hi everyone. In our last lecture, we had discussed about the de-smoking part, that is the uh, involvement of the cholinergic drugs in the de-smoking. We had discussed about the first-line drugs, second-line drugs in the off-label use, the most effective treatment, and the most effective drug is for the de-smoking purpose. So now in this lecture, we are going to discuss basically the anticholinergic drugs. Actually, in our last lecture, there was another question that was the anti-snake snake venom or the poison that can be treated by the administration of the cholinergic drugs. So I'll be making video on this topic later on, but now let's discuss the anticholinergic question. So in this video, especially we'll discuss about the anticholinergic drugs. So the drugs which are actually act on the cholinergic receptor and causes some changes. So we'll be covering especially uh, three organ of the body in this lecture. That will be the cortex of the brain and the basal ganglia of the brain and the vestibule, that is the inner ear. That is also the part of the brain. So let's begin the What are lecture. the anticholinergic drugs? So, anticholinergic drugs are the category of the drugs that block the acetylcholine receptor. As we know that the acetylcholine receptors are of two types, that is the muscarinic and the nicotinic. So, nicotinic receptor is further divided into NN and the NM, that is present in the muscles and it is present in the nerve. And look here that the muscarinic receptor or the muscarinic receptor is uh, blocked by anticholinergic drugs that will be known as antimuscarinic, or by convention it is also known as the anticholinergic drugs. तो जब भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलेंगे तो इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए ये एंटी मस्कुरिनिक ड्रग्स है. तो in case of the nicotinic receptor, the when the drug block the N receptor. This category will be known as the ganglionic blocker, and the drug which will block the NM receptor will be known under the category of the non-depolarized muscle reluctant. Remove this term. Non-depolarized muscle reluctant. Relaxant. So proceeding for the next question, that is the antimuscarinic drugs. It is of uh, three types, that is the natural, synthetic, and the other class. So in case of natural, there are mainly two. Remember, ये बहुत ज़्यादा important है याद रखने के. और atropine and the hyoscine. The atropine is an anticholinergic drug that is derived from the Atropa belladonna or the datura, and the hyoscine, which is also known as the scopolamine. These are the two very important drugs, anticholinergic drugs. तो रेस्टोल में दिया गया है सिंथेटिक, बाकी सब तो सिंथेटिक में आएगा. और अदर क्लासेस में क्या है, इसको याद रखने के लिए हम ट्रिक याद रख सकते हैं. ATAQA अटाका. तो ए फॉर एंटीहिस्टामिनिक, दिस इज TCA, एंटीसाइकोटिक, क्विनाइन, and the amantadine. To remove this, so this one is especially important, that is the antihistaminic has the same property like the atropine. So proceeding to next slide. So before going to the next part, let's observe the poisoning of the anticholinergic drug. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का पॉइजनिंग से क्या हो सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि जब when we used to study the cholinergic drug, this is the acetylcholine, we are observing that there was the symptoms of dumbbells. तो dumbbells में क्या क्या था, डायरिया था, यूरिनेशन था, मिडजेसिस था, ब्लैडर ये सब था, सलाइवेशन, सीक्रेशन, स्वेट, मतलब स्वेटिंग किया था.
लेकिन जब भी मतलब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का पॉइजनिंग होगा, सपोज एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है ना, इसका पॉइजनिंग से मतलब क्या क्या हो सकते हैं, तो सिर्फ कंप्लेन कंप्लेन में आएगा डिक्रीज ऑफ स्वेटिंग। तो जब स्वेटिंग डिक्रीज होगा, तो स्वेटिंग ज्यादा होने से क्या होता है, मतलब इवोपोरेशन होता है तो बॉडी कूल डाउन होता है ना, तो इसमें हाइपरथर्मिया हो जाएगा। तो हाइपरथर्मिया होने से वेसोडाइलेशन हो जाएगा, तो वेसोडाइलेशन विल कॉज द फ्लशिंग ऑफ द स्किन एंड द ड्राई आइज, ड्राई माउथ, opposite of the cholinergic action, the midriasis होगा, and the cycloplegia. So what is cycloplegia? We know the midriasis. What is cycloplegia? Cycloplegia is actually the paralysis of ciliary muscle of the eye. So now coming to the next, that in CNS there will be delirium, hallucination, and the seizure. So what is delirium? Delirium is actually is the acute type of dementia. Hmm. Okay. So next, there will be tachycardia, constipation, urinary retention. मतलब उसमें ब्रेडिकार्डिया था, डायरिया था, और यूरिनरी मतलब यूरिनरी पास मतलब ओवर एक्टिव, ज्यादा यूरिनेशन था ना, तो उसको उल्टा है यूरिनरी रिटेंशन। तो यार ऑन इम्पोर्टेंट थिंग इज द एंटीडोट। तो इसमें क्या दिया जाएगा, देखिए इसमें फाइसोस्टेगमेंट दिया जाएगा, जो कि टर्शियरी कार्बोमेट है, which can cross the blood-brain barrier. So one thing is very important to note here, that not the newstegment. Why? We all know it is quaternary comet that doesn't cross the blood-brain barrier. तो इधर एक चीज नोटिस किया गया, एट्रोपिन के पॉइजनिंग में फाइसोस्टेगमिन दिया जाता है, और इसका पॉइजनिंग में ये जो कोलिनर्जिक एलिमेंट है ना, इसका पॉइजनिंग में फिर एट्रोपिन दिया गया था। तो नाउ कमिंग टू द एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी में जो ऑर्गन है, उस ऑर्गन में स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, और उस रिसेप्टर में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का क्या एक्शन हो सकता है उसको ही देखेंगे। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस द एक्शन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ऑन cerebral cortex, basal ganglia, and the vestibule, that is the inner ear. So let's start. So first, the cerebral cortex. We all know that the acetylcholine that increases the memory or the cognition is the part of the cerebral cortex, or the frontal lobe of the brain. So when we administered the anticholinergic drugs, the atropine or the hyoscine, there will be decreasing of cognition or the cognitive power. तो इधर हम देखेंगे एट्रोपिन और हायसिन में डिफरेंस क्या है, मतलब कोग्निशन तो डिक्रीज करेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है। जब एट्रोपिन मतलब देंगे तो कोग्निशन डिक्रीज होगा, उसके साथ एक्साइटेशन होगा, सीजर होगा ब्रेन में। लेकिन जब हायसिन देंगे कोग्निशन डिक्रीज होगा, बट एलोंग विथ उसके साथ सेडेशन होगा, मतलब ब्रेन का कामनेस होगा, मतलब एक्साइटेशन का ऑपोजिट होगा। तो इधर क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रूथ सीरम और द नार्को एनालिसिस। तो ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है। तो देखिए, किसी भी आदमी को सब मतलब इफ यू वांट समवन टू से ट्रूथ, he or she would not be suffering from so much of effort, but someone is trying to tell the lie, then he will be using his most of the part of the brain, there will be more effort. So when we administer the hyoscine anticholinergic drugs, there will be decrease in cognition along with the sedation, calmness। तो उसका ब्रेन का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, वो सच बोल देगा। तो इसलिए इसको मतलब ट्रूथ सीरम बोला जाता है। लेकिन ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस है थायोपेंटोल। दिस ड्रग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रूथ सीरम और द नार्को एनालिसिस। तो इट हैज मोर ब्लड रन
बैरियर पेनिट्रेशन, रिमेम्बर दिस वन। तो ये तो गया इसका फंक्शन। तो द atropine or the hyoscine, that the anticholinergic drugs is contraindicated in case of the Alzheimer's disease. Why? Why? Because in Alzheimer's disease there is already and the patient is suffering from dementia. If we administer the anticholinergic drug, there is further decreasing of the cognition. That's one. Now coming to the next part, that is the basal ganglia. So in this case, look here, this is the part of the basal ganglia. So in this region of the brain, there is a well coordination or balance of the dopamine and the acetylcholine. तो देखो, अगर डोपामिन इंक्रीज होगा तो एसिटाइलकोलिन डिक्रीज, डोपामिन डिक्रीज होगा तो एसिटाइलकोलिन इंक्रीज। तो ये बहुत ही बुरा तरीके से दिखा दे रहा है, जो कि पार्किंसन डिजीज में देखा जाता है। There is the decrease of the dopamine and the increasing of acetylcholine. So the increased level of the acetylcholine causes the muscle rigidity, which was the symptom of the Parkinson disease. तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है? So for the Parkinson disease, the treatment is like that: anticholinergic drugs, like the BBB. You can remember BBB, the benhexol, piperidine, and the penstropine. So either here one thing is to be clear that the drug induced Parkinson disease. तो मतलब उस ड्रग्स के लेने के वजह से पार्किंसनिज्म इंड्यूस हो सकता है। तो व्हाट आर those drugs? That can be the antipsychotic that block the dopamine receptor, ब्लॉक कर देगा, और metoclopramide, this is the drug used for the एंटी वोमिटिंग। ये ड्रग्स और ये ड्रग्स दोनों मतलब वो पार्किंसनिज्म इंड्यूस कर सकता है। तो फर्दर for the treatment we can use the antihistaminic drugs, because these are also the category of the anticholinergic here, antihistaminic. So these are the promethazine, first one, and the second one is the dif diphenhydramine. So going on this one first. Now coming to the vestibular part. Here the vestibule, the inner ear, and we all know that the inner ear is the part of the brain. तो इधर क्या होता है देखिए, ये सेमी सर्कुलर पेन है ना, ये सेमी सर्कुलर, ये वेस्टिबुल है, इसके अंदर रहता है एंडोलिम्फ। तो जब भी हम चलते हैं, मतलब whenever suppose take an example for an individual is traveling in a car, तो his endolymph will be moving, ये हिलेगा तो इधर से इम्पल्स जनरेट होगा, तो ये इम्पल्स जनरेट होके ये सीधा जाएगा सेरेब्रम के पास। तो सेरेब्रम से गुजरते हुए ये जाएगा सी टी जेट, इट विल बिकम टू द सी टी जेट, इज द केमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन। तो उधर से स्टिमुलस मिलेगा कि नोजिया वॉमिटिंग का। तो इसको बोला जाता है मोशन सिकनेस। तो ये कैसे होता है? ये वन रिसेप्टर होता है और एस वन रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर होता है। तो इसको ब्लॉक करने से हमारा मतलब नोजिया वोमिटिंग को हम रोक सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस we can use the anti-muscarinic drugs that will block this receptor, and the antihistaminic drug that will block this receptor. तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ये हायोसिन है, जस्ट मार्कअप याद रखने का चीज है, ये हायोसिन है और एंटीहिस्टामिनिक में होगा। ये भी याद रखना कि ये फास्ट जनरेशन का होना चाहिए, क्योंकि ये the drug should cross the blood-brain barrier, because the inner ear is the part of the brain. So this is the diphenhydramine. This is the diphenhydramine and this is the hyoscine. So further more drugs are there. There's the promethazine, cyclazine, meclazine, and the cinnarizine.
So here the synergy is also responsible for the blocking of the calcium channel on the vestibular nerve. अच्छा, तो रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? रूट है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल रूट है। और साइड इफेक्ट क्या है इसमें? सीडेशन है साइड इफेक्ट। तो इसका साइड इफेक्ट अक्सर ये है कि बंदा सो जाएगा और वो अपना मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो इधर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि मतलब दिमाग में रहना चाहिए। The subject must take the medicine at least 30 minutes before the journey. And one very important thing is that the prevention of nausea and vomiting. तो ये सिर्फ प्रिवेंट ही कर सकता है। मतलब अगर देखिए, ये सिग्नल अगर ये सिग्नल ये सिग्नल अगर इधर से सेरिबेलम तक पहुंच गया और सिटीजन तक पहुंच गया, उसके बाद दवाई लेने का कोई मकसद नहीं बनता है। वो केमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट हो गया तो मुझे वोमिटिंग कर देगा वो। तो कम से कम 30 मिनट पहले लेना चाहिए ताकि वो ड्रग अच्छी तरह से M1 और H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सके। तो इन दिस लेक्चर आई थिंक वी हैव कवर्ड the three important part of the brain, that is the cerebral cortex, the basal ganglia and the vestibule, that is the inner ear. So try to recall all the drugs and the receptors. This will be very important for viva question in the university exam. So thank you for watching. I am making the video and now the time is 2:17 a.m. Okay, thank you. Study well.